In today's video, we're going to showcase some remarkable hair transplant transformations. So let's begin with our first patient, Atul Dhiman. Is your hairline slowly creeping back and you are still ignoring it? Don't ignore it, because this could be an early sign that you are entering into Norwood grade 2 baldness. This is the stage where the hairline starts to recede slightly and most people think it's just normal. But in reality, this is the starting point of permanent hair loss. If you take action at this stage, hair loss can be controlled and even reversed. But if you ignore it, it can quickly progress to grade 3 or 4 without you even realizing. PRP therapy, medication and expert care work best when you start early. So stop waiting and take the first step towards securing your hair's future. In today's case study, we are going to share our patient's 17-month hair transplant journey, who was facing the challenges of Norwood grade 2 baldness, in which his hairline has completely receded. In addition, the frontal area is bald. But the rest of his scalp remained thick with hairs, including the mid-scalp and crown area. Thankfully, he had a healthy donor area, which played a significant role in his transplantation journey. Stay tuned for an amazing transformation, and don't forget to subscribe to our channel. After this, our surgeons design a custom-shaped hairline that perfectly resonates with the patient's facial features, keeping the hairline slightly lower in the middle and at the exact distance of 7 cm from the glabella point, and also marked the affected areas. Now you might be thinking, how many grafts are needed for Norwood grade 2 baldness? Don't worry, in this video, we will explain everything clearly. You will get to know how many grafts were used and exactly where they were implanted on the scalp. In this case, our experts carefully implanted single fine hair follicles in the hairline zone to achieve a soft and natural look. Every follicle was placed with precision to recreate a realistic and well-defined hairline. To enhance volume and density in the frontal area, we used double and triple hair follicles. The approach was different, which gave him a fuller and more youthful appearance. A total of 2,200 grafts were transplanted, all taken from the patient's safe donor area, ensuring strong, long-lasting results. This isn't just a treatment, it's a thoughtfully planned transformation to help you feel confident again. After the implantation was completed, our doctor advised a simple but important 1 to 5 days care plan for the patient. Protect your scalp from dust, pollution and direct sunlight. Wear a surgical loose cap at all times to keep the scalp safe and covered. If you feel itching on the transplanted area, do not scratch it. The implanted follicles are placed by making tiny slits. They are not stitched or glued, so scratching can damage them and affect the final result. To keep the area clean and free from infection, use a saline spray twice a day. Following these easy steps helps ensure faster healing and more natural, long-lasting results. Because this isn't just about hair, it's about bringing back your confidence. One month after the transplant, when our patient visited our clinic for his first follow-up PRP session, our experts noticed around 70% shedding on his scalp. This shedding is a normal part of the hair restoration journey, ensuring that new, stronger hair will eventually grow in its place, leading to a fuller, more natural appearance. Three months after the transplant, the patient's shedding phase was completely over and the new hair growth had already begun in the transplanted areas. The best part was that his native hair had started blending beautifully with the transplanted hair, making him look completely natural. The hairline had taken proper shape, giving the face a well-defined and youthful frame. The scalp was now filling up with fresh, healthy hair, creating a fuller and more natural appearance. And this is just the beginning. In the coming months, we expect even better density and thicker growth. 5 months after the transplant, if we compare the results with the 3-month mark, the difference is clearly visible. The hairline is now well defined and frames the face beautifully. In the frontal area, growth has significantly improved and looks much denser.
This kind of early growth can vary from patient to patient as the factors like age, baldness grade and diet play a major role in the progress. The scalp has started to fill in with healthy new hair, which is already enhancing the patient's overall appearance. And remember, this is just the 5-month result. Even better outcomes are expected in the coming months. At 7 months post-transplant, the progress was noteworthy. The hairline became even more defined, further enhancing the patient's overall appearance. The previously receded areas now had healthy, natural-looking growth, seamlessly blending with the rest of the scalp. The frontal area had gained significant density, contributing to a fuller, more youthful look. At this stage, the transplanted hair had matured noticeably, offering a clear improvement in volume and texture. The transformation was impressive, and these results will continue to refine and improve as the growth phase progresses with further improvement in density, texture, and naturalness. Because a hair transplant doesn't just transform your look, it rebuilds your confidence. The journey is still in progress, and the best is yet to come. It's time to reveal the final life-changing results. Results that didn't just bring back hair, but also restored confidence and made our patient look years younger. 17 months after the transplant, the transformation is truly incredible. If we compare his current look with the time he first walked in for consultation, the difference is unbelievable. At that time, his hairline was completely gone, which made his face look much older and tired. Today, that same hairline has been beautifully redesigned, perfectly framing his face and highlighting his natural features. The frontal zone, which earlier had taken an M shape due to baldness, now has a strong visible density. The transplanted hair has blended so naturally with his existing hair that it's nearly impossible to tell he ever had a transplant. His scalp is now full of thick, healthy hair, giving him a fresh, youthful and confident appearance. And the best part, he now styles his hair however he likes. No more worrying about thin areas or lack of volume. This final outcome is a true example of what a successful hair transplant can do. Not just in terms of looks, but in how it brings a person's self-esteem and confidence back to life. This is the journey of our patient who went from Norwood grade to baldness to a fuller, natural-looking hairline and improved frontal area. If you are looking to transform your look from bald to young and energetic, book an appointment with our expert team. Next, we will take a look at the hair transplant results of Deepesh Joshi. क्या हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से स्कैल्प खराब हो जाती है? क्या कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं? ऐसे बहुत से मिथ्स आपने भी जरूर सुने होंगे या फिर आपके मन में भी कभी ना कभी जरूर आए होंगे। लेकिन क्या ये सच है या सिर्फ झूठे वायरल मिथ हैं? इसलिए आज की इस केस स्टडी में हम इन्हीं क्वेश्चंस से जुड़े मिथ्स का सच रिवील करेंगे और आपको दिखाएंगे एक ऐसा रियल ट्रांसफॉर्मेशन जिसे देखकर आप खुद हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का डिसीजन कॉन्फिडेंटली ले पाएंगे। और हाँ, अगर आप भी बॉल्डनेस फेस कर रहे हैं या किसी कंफ्यूजन में हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और ऐसे ही रियल ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अगर आपका भी कोई सवाल है हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। क्या पता आपका एक सवाल किसी और के लिए लाइफ चेंजिंग सोल्यूशन बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मीट आवर पेशेंट जो नॉर्वुड ग्रेड 3 की बॉल्डनेस का सामना कर रहे थे। इस स्टेज पर उनकी हेयरलाइन कंप्लीटली रिसीड हो चुकी थी और एक एम शेप में कन्वर्ट हो गई थी। फ्रंटल एरिया भी लगभग पूरी तरह से खाली हो गया था। सिर्फ फ्रंटल टफ्ट में कुछ बाल बचे हुए थे, जिससे वो और भी ज्यादा एजेड लग रहे थे। लेकिन गुड न्यूज ये थी कि उनकी स्कैल्प का बाकी हिस्सा हेल्दी था, जहां ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं थी। थैंकफुली उनके पास थिक, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी फॉलिकल्स से भरा डोनर एरिया भी था, जो ट्रांसप्लांट में अपना सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा और उनके ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्पफुल रहेगा।
पेशेंट की कंप्लीट स्कैल्प को एग्जामिन करने के बाद हेयर ट्रांसप्लांट का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है हेयर लाइन डिजाइनिंग, जिसमें अफेक्टेड एरियाज को मार्क किया जाता है। इसलिए इसमें सबसे पहले हमारे एक्सपर्ट्स ने बालों को ट्रिम किया, फिर हेड वॉश कराया, जिससे स्कैल्प प्रोसीजर के लिए परफेक्टली रेडी हो जाए। उसके बाद पेशेंट के फेशियल फ्रेम को ध्यान में रखते हुए एक कस्टम शेप्ड हेयर लाइन डिजाइन की गई, जो पेशेंट के फेशियल फीचर्स और बोन स्ट्रक्चर के साथ नेचुरली मैच हो पाए। हेयर लाइन को ग्लैबुला पॉइंट यानी दोनों आईब्राउज के बीच के सेंटर पॉइंट से एग्जैक्टली 7.1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे मेंटेन करते हुए प्लेस किया गया। यह प्लेसमेंट 4 फिंगर्स रूल को फॉलो करके की जाती है। इससे हेयर लाइन नेचुरल बनती है और आर्टिफिशियल नहीं लगती, जो एक ट्रस्टेड एस्थेटिक गाइडलाइन है। हेयरलाइन के साथ टेम्पल्स को भी बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया, जिससे पेशेंट का कंप्लीट लुक अचीव हो पाए। फिर बाकी बचे अफेक्टेड एरियाज को भी मार्क किया, जिससे ग्राफ्ट इम्प्लांटेशन बिल्कुल इवनली हो और नेचुरल डेंसिटी मेंटेन रहे। इस लेवल की डिटेलिंग ही QHT क्लिनिक के रिजल्ट्स को रियल और नेचुरल बनाती है। हेयरलाइन डिजाइन कंप्लीट होने के बाद हमारे एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट्स ने मार्किंग एरियाज को फॉलो करते हुए फॉलिकल इम्प्लांटेशन का प्रोसेस शुरू किया। सबसे पहले हेयरलाइन जोन में सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स को जिगजैग पैटर्न में केयरफुली इम्प्लांट किया गया। इस यूनिक टेक्निक से हेयरलाइन बिल्कुल नेचुरल दिखती है और एकदम वैसे ही जैसे नेचुरली ग्रो होने वाले बाल दिखते हैं। हेयरलाइन के साथ टेम्पल्स में भी सेम फॉलिकल्स को इम्प्लांट किया गया, जिससे फेशियल फ्रेम कंप्लीटली अचीव हो पाए और फ्रंट लुक शार्प और यूथफुल लगे। उसके बाद फ्रंटल एरिया में वॉल्यूम और डेंसिटी वापस लाने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स को इम्प्लांट किया गया। इस स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट से नेचुरल थिकनेस आती है और रिजल्ट्स लॉन्ग लास्टिंग बन जाते हैं। इस पर्टिकुलर केस में टोटल 3500 ग्राफ्ट सक्सेसफुली इम्प्लांट किए गए, वो भी एक्सट्रीम प्रिसिशन के साथ। और जैसे ही इम्प्लांटेशन कंप्लीट हुआ, हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट को एक पर्सनलाइज्ड पोस्ट केयर प्लान हैंडओवर किया। इस केयर प्लान में मेडिकेशंस, स्कैल्प केयर टिप्स और डेली प्रिकॉशंस इंक्लूडेड थे, जिससे पेशेंट को फास्ट रिकवरी, मिनिमल डिस्कंफर्ट और मैक्सिमम हेयर ग्रोथ अचीव करने में हेल्प मिलेगी। और यही डिटेल्ड केयर ही नेचुरल, स्ट्रॉन्ग और परमानेंट रिजल्ट्स का सीक्रेट होती है। ट्रांसप्लांट के 1 मंथ बाद पेशेंट जब क्लिनिक में अपना फर्स्ट फॉलोअप PRP सेशन के लिए वापस आए, PRP सेशन स्टेप हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी का एक बहुत क्रूशियल फेज होता है, जो हीलिंग को बूस्ट करता है और हेल्दी हेयर रीग्रोथ में मदद करता है। स्कैल्प एग्जामिनेशन के दौरान हमारे एक्सपर्ट्स ने ऑब्जर्व किया कि लगभग 60% ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स शेड हो चुके थे, जो कि हेयर ग्रोथ का एक बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस होता है। यह फेज शेडिंग फेज कहलाता है, जिसमें ट्रांसप्लांटेड हेयर गिरते हैं, लेकिन हेयर रूट्स स्कैल्प में सेटल हो जाते हैं। इसके बाद नए और स्ट्रॉन्ग हेयर ग्रो करना शुरू करते हैं। कई पेशेंट्स इस फेज में थोड़ा एंग्शियस हो जाते हैं, लेकिन टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। ये एक नेचुरल हेयर ग्रोथ साइकिल का पार्ट है, जो फाइनल रिजल्ट्स को और भी बेहतर बनाता है। साथ ही साथ इस स्टेज तक डोनर एरिया भी कंप्लीटली हील हो चुका था और वहां कोई विजिबल स्कारिंग या डिस्कंफर्ट नहीं था। ये सब माइलस्टोन्स दिखाते हैं कि पेशेंट की रिकवरी एक हेल्दी और प्रॉमिसिंग डायरेक्शन में जा रही है। ट्रांसप्लांट के 2 महीने बाद जब पेशेंट अपने सेकंड फॉलोअप के लिए क्लिनिक आए, तो हमारे एक्सपर्ट्स ने ऑब्जर्व किया कि शेडिंग फेज लगभग कंप्लीट हो चुका था। अब नए बालों की ग्रोथ क्लियरली शुरू हो गई थी और स्कैल्प में एक विजिबल इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही थी। ये वो फेज होता है जहां ट्रांसफॉर्मेशन अपने अर्ली विजिबल रिजल्ट्स दिखाना स्टार्ट करता है। इस स्टेज पर बहुत लोगों के क्वेश्चंस हमें रिसीव होते हैं। हमारे तो ट्रांसप्लांटेड एरिया में कोई ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही। तो हम आपको बता देते हैं कि ये कंडीशन पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है। इसमें पेशेंस रखने की जरूरत होती है। इस स्टेज पर कंपैरिजन करना गलत है, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट का फाइनल रिजल्ट साइंटिफिकली 10 to 12 मंथ्स में अचीव होता है। एट द सेम टाइम पेशेंट का डोनर एरिया भी कंप्लीटली हील हो चुका था। कोई रेडनेस, स्वेलिंग या डिस्कंफर्ट नहीं था। फॉलिकल्स ने स्कैल्प में अच्छे से ग्रिप बना ली थी, जो अपकमिंग ग्रोथ के लिए फाउंडेशन रेडी करता है। इस स्टेज तक पेशेंट को भी नोटिसेबल कॉन्फिडेंस बूस्ट मिल चुका था। जहां पहले बॉल्ड पैचेस थे, अब वहां सॉफ्ट बेबी हेयर्स ग्रो कर रहे थे। अब अगले कुछ महीनों में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और भी ज्यादा थिकनेस, डेंसिटी और नेचुरल लुक हमें देखने को मिलने वाले हैं। ट्रांसप्लांट के सिर्फ 4 महीने बाद पेशेंट के स्कैल्प पर विजिबल ग्रोथ क्लियरली दिखने लगी थी।
ये ग्रोथ इस बात का साइन है कि फॉलिकल्स अब मैच्योर हो गए हैं और नेचुरली थिकनेस भी शो हो रही है। सबसे नोटिसेबल चेंज है हेयरलाइन और टेम्पल्स का, जो अब पेशेंट के फेशियल फीचर्स के साथ परफेक्टली फ्रेम कर रहे थे, एक बैलेंस्ड और यूथफुल लुक क्रिएट कर रहे थे। सबसे अच्छी बात यह थी कि नए बाल पेशेंट के एग्जिस्टिंग हेयर के साथ सेम रेट पर ग्रो हो गए थे, जिससे ओवरऑल अपीयरेंस कंप्लीटली नेचुरल लग रहा था। फ्रंटल एरिया में भी काफी इंप्रेसिव डेंसिटी डेवलप हो गई थी। ट्रांसप्लांटेड हेयर्स और नेटिव हेयर्स इतने अच्छे से ब्लेंड हो गए थे कि डिफरेंस आइडेंटिफाई कर पाना मुश्किल था। अगर बात करें डोनर एरिया की, तो वो भी इतना परफेक्टली हील हो चुका था कि अब कंप्लीटली हील हो गया था, जैसे कभी कोई सर्जरी हुई ही नहीं थी। ट्रांसप्लांट के 5 महीने बाद पेशेंट का ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट आउटस्टैंडिंग था। इतने शॉर्ट टाइम में उनकी ओवरऑल अपीयरेंस ने नोटिसेबल इंप्रूवमेंट अचीव कर ली थी। जो हेयरलाइन एंड टेम्पल्स पहले पूरी तरह रिसीड हो चुकी थी, अब वो क्लियरली डिफाइंड और स्ट्रक्चर्ड नजर आ रहे थे। पेशेंट के चेहरे को एक बैलेंस्ड और वेल फ्रेम्ड लुक मिल गया था। फ्रंटल और मिड स्कैल्प एरियाज में भी अच्छी खासी डेंसिटी डेवलप हो चुकी थी और ट्रांसप्लांटेड हेयर्स सीमलेसली नेटिव हेयर्स के साथ ब्लेंड हो गए थे। लेकिन ये अभी फाइनल रिजल्ट नहीं था। रियल ट्रांसफॉर्मेशन तो अभी भी आनी बाकी थी। अर्ली ग्रोथ हर पेशेंट में अलग होती है, जो कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे एज, जेनेटिक्स, डाइट और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या पेशेंट ने डॉक्टर्स का दिया हुआ केयर प्लान प्रॉपर्ली फॉलो किया है या नहीं। यह फेज उनके ट्रांसफॉर्मेशन का एक मेजर टर्निंग पॉइंट था, जहां से सिर्फ रिजल्ट्स ही नहीं बल्कि उनका कॉन्फिडेंस भी विजिबली बूस्ट दिखाई दे रहा था। इट्स टाइम टू रिवील द फाइनल रिजल्ट, जिसने पेशेंट को और उनके कॉन्फिडेंस दोनों को ही 360 डिग्रीज ट्रांसफॉर्म कर दिया। आइए पहले एक इमोशनल एग्जांपल से समझते हैं कि बालों की असली इंपॉर्टेंस क्या होती है। आपने आयुष्मान खुराना की बाला मूवी तो देखी ही होगी, जिसमें एक लड़के की शादी सिर्फ इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि उसके बाल नहीं होते। जब विग लगा के शादी होती है तो भी वो रिश्ता ज्यादा दिनों तक झूठ पर टिक नहीं पाता, क्योंकि लोग आर्टिफिशियल चीजें एक्सेप्ट नहीं करते। बाल सिर्फ एक अपीयरेंस का पार्ट नहीं, कॉन्फिडेंस और आइडेंटिटी का भी बेस होते हैं। अब बात करते हैं हमारे पेशेंट की। जब वो हमारे क्लिनिक आए थे तब उनकी हेयरलाइन कंप्लीटली रिसीड हो चुकी थी, टेम्पल्स ऑलमोस्ट खाली थे और फ्रंटल एरिया में डेंसिटी बिल्कुल नहीं थी। आप उनकी बिफोर कंडीशन खुद देख सकते हैं, एक डल अंडर कॉन्फिडेंट लुक, जहां चेहरा उनका एक्चुअल पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट ही नहीं कर पा रहा था। और अब वो 8 मंथ्स के फाइनल रिजल्ट्स के बाद पूरी तरह बदल चुका है। पेशेंट की हेयरलाइन और टेम्पल्स अब परफेक्टली फ्रेम हो चुके हैं, जिसे देखकर कोई बता नहीं सकता कि ट्रांसप्लांट हुआ है। फ्रंटल एरिया में थिक, स्ट्रॉन्ग एंड वॉल्यूमिनस हेयर ग्रोथ क्लियरली विजिबल है, जो ओवरऑल एक यूथफुल और स्टाइलिश लुक दे रही है। लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, बल्कि हमारे डॉक्टर्स का इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस प्लस आर्ट प्लस साइंस, तीनों का कॉम्बिनेशन है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, पेशेंट का पेशेंस और कंसिस्टेंसी। रेगुलर केयर प्लान फॉलो करना, मेडिसिन लेना, फॉलोअप्स अटेंड करना, ये सब मिलके फाइनल रिजल्ट्स अचीव करने में हेल्प करते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं होती, लेकिन ये उन्हीं लोगों का कहना है जिनके सिर पर बाल होते हैं। लेकिन आप उनसे पूछिए जिनके बालों का मजाक उड़ाया जाता है, जिनको शादी या जॉब इंटरव्यू में इग्नोर किया जाता है। इसलिए हेयर ट्रांसप्लांट इन सब प्रॉब्लम्स का एक परफेक्ट सॉल्यूशन है। आज हमारे पेशेंट कॉन्फिडेंटली अपने बालों को स्टाइल भी कर सकते हैं, अपनी चॉइस से कट भी करा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, वो कॉन्फिडेंटली सोशल इंटरैक्शंस एंजॉय कर सकते हैं। यही होता है असली ट्रांसफॉर्मेशन। हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ एक प्रोसीजर ही नहीं, बल्कि ये एक नई शुरुआत है आत्मविश्वास की, प्रसन्नता की और फैशनेबल अंदाज की। आई होप वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आपको जो मिथ्स बताए थे, उन सब के सॉल्यूशंस आपको इन 8 मंथ्स के रिजल्ट से मिल ही गए होंगे, और ये साबित करते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स सिर्फ टेम्पररी नहीं बल्कि परमानेंट होते हैं। अगर आप भी हमारे इस पेशेंट की जर्नी से इंस्पायर हुए हैं तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ अपनी कंसल्टेशन बुक करें और बॉल्डनेस को करें गुड बाय।
And finally, let's explore the amazing transformation journey of our third patient, Ajay Singh Mehta. Honestly, I will say I have experienced there is no pain, and due to anesthesia, you will not feel any pain. As per my experience, I will say that the QHT is the best clinic in entire India. Hello, I am Ajay Singh Mehta, and I am from Rudrapur, Uttarakhand, and I am here in QHT for my third PRP, and in 5th of Feb, I have done the surgery, and it's been 4 months since then. And before surgery, I have facing hair fall approximately about 1 to 2 years, and I had used many uh, medicines, and it is not helping at that time. So after that, some from YouTube, and I have seen this QHT, and I came here, and doctor suggested me for QHT transplant, and I was nervous at that time. So after the 4th month before, I have taken this surgery. So in QHT, I have before visiting to QHT, I have seen a lot of clinics, but here the difference is the result. QHT gives the best result, and because of its technology, a quick hair transplant, and the reasonable price, and QHT gives the best hairline, and because it gives natural hairlines, as you can see, and QHT have the maintain hygiene as well, and it gives a better result. So I contact to QHT through mobile number and through WhatsApp, and they suggested me for pre-booking of the transplant, and if they gives 1 year of time, so in which I can apply for transplant my surgery. And at the time of surgery, I was nervous, so the staff and the doctors convinced me that it will help and for my better transplantation and better hairline. So at the time of transplantation, it took around 1 day whole, and in the morning through morning to the evening, and around 2600 grafts they have suggested me for QHT transplantation technique, and around 3000 grafts were implanted on my head. So the margin was 400, but they didn't charge me for that. So as everyone has a doubt that during transplantation how much pain it occurs, but honestly, I will say I have experienced there is no pain, and due to anesthesia, you will not feel any pain, except in the donor area. For 1 day, you will feel some pain for the next night, and for that you have to take precautions. And after in 1 week, the pain was gone, and swelling was also there in my forehead, little bit swelling, just because of the liquid during transplantation. But the swelling was also gone as per the prescription doctor has given me. I took all the prescriptions, and it helped me a lot at that time. And after the surgery, the QHT team was in my contact whole the day up to 1 to 2 months. And they suggested me how to clean my follicles and how to clean my donor area and how it will heal quickly. So daily they ask for my pictures, and they suggest me what I have to do to use saline water at that time. And around 3 to 4 weeks it took to heal my donor area. As you can see, it is healed now. So after 1 month, I started facing the shedding phase, but I have took the QHT technique. So the shedding phase was not up to that level, because in quick hair transplant you will face a little bit of shedding phase only. Only 30 to 40% of my transplanted hair were fallen, and the rest of my hairs has remained same. So now it's been 4 months. So the fallen hairs in the shedding phases, they started coming now, and
hoping for that they come soon. And doctor has suggested me that it will take around 6 to 7 months totally to get the best result. As per my experience, I will suggest that QHT is the best clinic in entire India because the price is reasonable, very reasonable. In Bangalore, Delhi, and other states, the price is much higher, around 2 to 3 times higher from the QHT, and the QHT gives best result also due to its consistency and the experienced doctors and the hygiene they maintain and the good work of the staff. They help you all the time and they remain in contact with you through the WhatsApp and through on call always. And for others, I will recommend that they should join QHT and they will feel a different environment here as per the transplantation, and it is very easy to reach here in Haridwar. So as per my experience, if you have a good donor area and your hair loss is occurring due to your heredity, I think a hair transplant is the best choice because medicine will not help you to get the hairline. Medicine can help up to a certain level only in your crown area. Minoxidil you can use, but for your hairline losses, transplant is the best thing from my side, I think. And if you want to choose a transplant clinic, QHT is the best in India because many celebrities also come here and people are coming all over India, even from foreign. So they provide you best environment at a very reasonable price. So it's been 4 months now and और ये मेरी थर्ड PRP थी. So अभी तक जैसा एक्सपीरियंस था मैंने आपके साथ शेयर किया, और जैसे ही अब नेक्स्ट PRP में मैं आऊँगा 1 या 2 महीने बाद, सो उसके साथ मैं अपना रिजल्ट जैसा आपको होगा ऐसे दिखाऊंगा, और जुड़े रहिए मेरे साथ. थैंक यू QHT. Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.